है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। Se rappeler trois choses: la pureté, la vérité et la divinité. Qui est ou de pensée ordinaire ou encore de action ordinaire. La divinité veut dire accomplir des actions et créer des pensées grâce aux vertus divines. Cela est la divinité. Quand quelqu'un demande quelles sont les actions pécheresses, que leur dites-vous? Accomplir n'importe quelle action sous l'influence d'un vice est un péché. Alors, la divinité veut dire avoir des pensées, des paroles et des actions basées sur les vertus divines. Alors, vous comprenez l'importance de la vérité. Pouvez-vous faire en sorte d'être sans corps en une seconde? Pourquoi? Pouvez-vous être sans corps en une seconde? Pourquoi? Pouvez-vous devenir sans corps en une seconde? Pourquoi? Combien cela prend-il pour avoir cette pensée « Je suis une âme sans corps ». Combien de temps cela prend-il? Cela prend une seconde, n'est-ce pas? Alors, tout au long de la journée, continuez à préparer cet exercice. Alors, tout au long de la journée, préparez cet exercice. Je suis détaché, sans corps et aimé par le Père. Je suis détaché, sans corps et aimé par le Père. Je suis détaché, sans corps et aimé par le Père. Vous savez comment faire cela, n'est-ce pas? Alors, maintenant, oubliez tout en une seconde et devenez complètement sans corps. Alors, maintenant, oubliez tout en une seconde et devenez complètement sans corps. Acha. Oubliez tout en une seconde. प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का
जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. Give blessings and receive blessings. Donner des bénédictions et recevoir des bénédictions. Donnez du respect et devenez digne d'adoration. Quand une âme est déjà faible, alors au lieu de regarder ses faiblesses, donnez à cette âme la coopération et vous recevrez des bénédictions. Si vous n'êtes pas en mesure de faire quoi que ce soit d'autre, le moyen, l'effort le plus facile est de donner des bénédictions et de recevoir des bénédictions. Donnez du respect et devenez digne d'adoration. Celui qui donne du respect est respecté par tous. Et celui qui est respecté, il reçoit donc un droit au royaume et devient une âme digne d'adoration. Om Shanti. Om Shanti, bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 4. Donnez des bénédictions et recevez des bénédictions. Le sujet de ce soir, donnez du respect et devenez digne d'adoration. Écoutons maintenant Moini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Est-ce que tout le monde va bien? Très bien, oui. Oui, on vous entend. Oui, on peut vous entendre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Si vous écoutez, levez la main. Donc, c'est bien. Village, Peace Village ou ailleurs aussi. Je vois toutes sortes d'âmes, dit Moini. Elle est à Ahmedabad. Hier, nous avions un beau programme ici à Ahmedabad. Je ne sais pas combien d'entre vous avez vu la ville d'Ahmedabad récemment. Il n'y avait pas d'eau avant. Et on disait que c'était toujours très sec. Mais hier, nous avons vu plein d'eau, beaucoup d'eau, parce qu'ils apportent de l'eau. Alors, il y a de l'eau, il y avait de l'eau dans le lit de la rivière. Ils ont fait ce qu'on crée. Et tout autour de la rivière, il y a une belle promenade
il y a des lumières des, on peut marcher tout partout. Donc, il y a une promenade aussi sur le bord de la rivière. Avant, il n'y avait pas d'eau, mais la prochaine fois que vous venez à Ahmedabad, demandez aux sœurs d'aller vous montrer tout cela. C'était magnifique, dit Moini. Il y avait des milliers de brahmines. C'était un très bel endroit, un très beau programme. Cela ne coûte rien, dit Moini. Il y a des choses qui coûtent, des choses. Si on a besoin de donner un cadeau à quelqu'un, si on a besoin, si on veut leur donner ce dont ils ont besoin, cela peut coûter de l'argent, bien sûr. Mais ce que Baba dit, qu'est-ce qui est le plus important pour chacune des âmes en ce moment? C'est de s'en sentir digne, de s'en sentir compétent. Et cela se passe quand on respecte quelqu'un. Et quand on a ce respect, ce n'est pas un respect, le respect de l'âme, ce n'est pas physique. Ce n'est pas parce que la personne a un bon niveau, un bon statut ou un bon, une belle voiture. Ce n'est pas son statut social. On ne respecte pas les gens à cause de des formes ou des aspects extérieurs, mais parce que ce que l'âme a vraiment besoin, c'est du respect, quels que soient les sanskars des âmes ou les vieux sanskars ou les habits. Ce que l'on doit faire, c'est respecter. Respect vient du cœur. On ne peut pas respecter quelqu'un de l'extérieur et la personne s'en en aperçoit. Et cette personne ne me respecte pas. Ce ne sont que des paroles, mais le respect vient du cœur. Et ça peut être de la miséricorde et aussi des bénédictions. On sent la miséricorde parce que tout le monde veut empli de respect ou dans le respect du soi. Certains ne peuvent pas le faire, ne peuvent pas être dans cet état. Alors, on n'a pas besoin de se fâcher après cette personne ou parler des faiblesses de cette personne, mais plutôt, on doit donner du respect. On donne du respect à cette âme et ça ne doit pas paraître comme si on faisait ça d'une façon artificielle ou qu'on faisait semblant. La personne doit le sentir qu'on a du respect pour elle. L'âme doit le sentir. Désolée, le son n'est pas très bon. Donc, les bénédictions viennent du cœur. Pas seulement pour faire plaisir à cette personne. Ce n'est pas la raison pour laquelle on la respecte. On respecte la personne du fond de notre cœur. Alors, les bénédictions et les bénédictions et la miséricorde viennent du cœur. Et ce genre de coopération, dit Baba, ou ce genre d'offrandes sont des cadeaux. Et ils sont très, très, très utiles pour les âmes de sentir ce respect du soi et d'être respecté. Chaque parole que Baba utilise chaque mot a une signification spirituelle et cela aide à transformer la personnalité. Se sentir royal, sentir l'appartenance, sentir la loyauté. Ce sont les qualités que l'on ressent quand on respecte quelqu'un. Alors, le slogan de Baba d'aujourd'hui, donner du respect. Et quand on donne du respect, qu'est-ce qu'on reçoit? On devient digne d'adoration. Plusieurs d'entre nous diront, je ne veux pas vraiment être digne d'adoration.
Mais d'autre part, when you listen to the praise, vous écoutez la louange, vous écoutez le compliment et vous sentez que ce compliment vous revient. if I have to listen, Et si je dois écouter, pour moi, j'écoute la louange, je le souligne et je dois être comme cela. Je disais aux petites sœurs hier, il y avait un programme que l'on doit pas nécessairement, nous sommes tous des instruments, nous sommes des serviteurs. Ils ont dit non, c'est notre expérience, ce que l'on sent, on doit le dire. Alors, j'ai laissé cela comme ça. Mais généralement, on doit seulement chanter la louange de Baba. Et nous ne sommes que des instruments. On est automatiquement, alors quand l'âme est déjà faible, on est déjà louangé par Dieu. Donc, quand l'âme est déjà faible, elle est limitée. Et dans la vie de toutes les âmes, il y a un peu de faiblesse ou de limite. Alors, lorsqu'une âme est déjà faible, alors plutôt que de regarder ses faiblesses, apportez-lui votre coopération, une certaine coopération, et vous recevrez des bénédictions. S'il y a une situation, par exemple, certains sont en mesure de confronter cette situation, mais si on donne un bon conseil ou si on donne la coopération, ils vont certainement vous donner des bénédictions. Si vous ne pouvez pas faire rien d'autre, l'effort le plus facile, c'est de donner des bénédictions et recevoir des bénédictions. C'est l'effort le plus facile. Bien sûr, les bénédictions vous donnent avoir une bonne famille, avoir une bonne vie. Ce sont des bénédictions. Ainsi, vous pouvez faire une liste des bénédictions. Donnez du respect et devenez digne d'adoration. Celui qui donne du respect est respecté par tous et dans la mesure où il reçoit du respect, il peut prétendre à un droit au royaume et devenir une âme digne d'adoration. Mon attention va droit au royaume et cela, c'est du respect. Vous ne cherchez pas à avoir un droit, c'est votre droit de naissance. Ce n'est pas que vous voulez avoir ce niveau ou ce royaume. Toutes les dadis, c'est par respect qu'on leur a demandé, de conduire l'organisation. Mais plusieurs avaient le désir, mais ce n'est pas passé. Mais c'est par respect qu'on a donné la possibilité de diriger l'organisation. Et alors aussi, il y a nos habiletés, nos spécialités ont été vues d'une façon spirituelle et elles fonctionnent. Ainsi, vous aurez le droit au royaume. Donc, c'est très intéressant de penser à cela et que dans la pratique aussi, donner du respect. Et c'est pour cela que vous allez recevoir des bénédictions et du respect. Alors, c'est très beau, c'est très simple, mais ça a besoin d'être fait. Om Shanti. Ah, on voit là la famille Thaï. Allô, famille Thaï. À Bangkok. Om Shanti, ils sont à Bangkok. C'est très
Vous êtes, ah, ils sont en Inde. OK, mais c'est la famille de Bangkok, mais ils sont en Inde. Elle est en Ahmedabad. Elle dit, je suis Ahmedabad. Vous êtes Ahmedabad. Je suis très heureux de vous voir tous. We bless each other. On se bénit les uns les autres. Je sens vos bénédictions et vous sentez les bénédictions de Baba. Yeah, I saw some of you. J'ai vu certains d'entre vous. J'ai vu Jyoti. Jyoti, c'est la traductrice. Et d'autres aussi que je verrai en février-mars aussi. Om Shanti. महिमा सुनाऊं वो है बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है तो फिर आधा पौना घंटा वो बैठा, इतने में उसने धंधा समाप्त किया। जितना भी कारोबार घर में मांस आदि रखा हुआ था, मांस मच्छी आदि रखा हुआ था, उसको बेच दिया, दुकान साफ कर दिया, धुलाई कर दी। और उसके बाद सन्यासी को कहा कि आइए मैं अभी आपसे बात करता हूँ। तो उसने भी यही कहा कि आपको कैसे मालूम पड़ गया कि मैंने आज चिड़िया को भस्मीभूत कर दिया और ये माता को भी मैंने माता ने आपके पास भेजा है। उस जमाने में कोई मोबाइल टेलीफोन आदि तो था नहीं कि मालूम पड़ जाए। तो उसने कहा कि मैं जो है ना, हम जो है अपने गृहस्थ धर्म में रहते हैं और गृहस्थ धर्म जो है ना वही आदर्श धर्म है और उसके कारण हम इस प्रकार से हमारे में ये शक्ति आई हुई। इसका ऐसा कह करके वो व्याघ्र ने जो ज्ञान दिया उसका नाम है व्याघ्र गीता। अर्थात गृहस्थ धर्म जो है वो श्रेष्ठ धर्म है, उस बात को लेकर के महाभारत में ये है। तो हम सब गृहस्थी यहाँ बैठे हुए हैं, परंतु बाबा ने क्या कहा हुआ है? गृहस्थ धर्म जो है, गृहस्थ धर्म के अंदर जो आज का टॉपिक भी जो बहनों ने नक्की किया हुआ है कि नंबरवार जो पुरुषार्थी है उसमें से नंबर 1 पुरुषार्थी कैसे बने। ये टॉपिक मालूम नहीं बहनों ने कैसे सिलेक्ट किया। बहनों ने मुझे पूछा आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। मैंने कहा वो आप पसंद करो, आप जो भी टॉपिक पर कहेंगे उस टॉपिक पर मैं क्लास कराऊंगा। तो इन्होंने ये टॉपिक पसंद किया है। तो इसके ऊपर ब्रह्मा बाबा के साथ मेरी बहुत डिबेट होती थी। बाबा जो मुरली के अंत में याद प्यार देते थे ना, तो उसमें बाबा हमेशा ही कहते थे मीठे मीठे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग, ऐसा नमस्ते और गुड मॉर्निंग कहते थे। मैं हमेशा ही बाबा को कहता था कि बाबा मुझे आपका नंबरवार शब्द पसंद नहीं है, सबको कहो कि नंबर 1 पुरुषार्थी बच्चों को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग ऐसा कहो। तो बाबा कहते थे कि नहीं, मैं नंबर 1 सबको नहीं कह सकता हूँ, सभी बच्चे नंबरवार हैं। तो मैं कहता था कि बाबा ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार परमात्मा आए हुए हैं और परमात्मा मिले हुए हैं, जिसकी खोज हम इतने जन्मों से करते आए हुए हैं, और वो परमात्मा अभी हमको हमारे बाप के रूप में मिल जाए, तो फिर उसमें नंबरवार क्यों हो सकता है? सभी बच्चे नंबर 1 ही पुरुषार्थी हो सकते हैं, नंबरवार नहीं हो सकते हैं। तो बाबा कहते थे कि नहीं बच्चे तुमको क्या मालूम, ये तो बाप जाने। बाबा के सिंधी के महावाक्य है, आप जानते हैं। बाबा कहते थे गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने, इस प्रकार से बाप जाने, आप बच्चे कैसे जानेंगे? तो इस प्रकार से बाबा के साथ डिबेट होती थी। और फिर ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए। तो अव्यक्त होने के बाद बाबा ने मुरली चलाई थी। एक मुरली चलाई थी, मालूम है किस बात के लिए? बहानेबाजी के ऊपर मुरली चलाई थी
कि बच्चे बहाने बनाने में एक्सपर्ट है और बाबा ने बहानेबाजी के अंदर उस मुरली के अंदर कहा कि सभी बच्चे बहाने बनाने में नंबर 1 है। सभी बच्चे बहाने बनाने में नंबर 1 है और सबको नंबर 1 दे दिया। बाकी तब तक जो है ना सभी को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा याद प्यार देते थे। उस दिन सभी बहानेबाजी में नंबर 1 बच्चों को याद प्यार और ऐसा बाबा ने कहा भी सही। तो उस दिन बाबा ने बाद में, अभी तो बाबा टोली आदि देते नहीं, खाली दृष्टि देते थे। उस जमाने में तो बाबा टोली भी देते थे व्यक्त बाप दादा। तो मैं जब बाबा के पास टोली लेने के लिए गया तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे बैठो। तो बाबा ने बैठाया और मुझे बाबा ने कहा बच्चे आज तो तुम खुश हैं। तो मैं भूल गया था कि किस बात के लिए बाबा कह रहे हैं खुश है। मैंने कहा किस बात के लिए बाबा खुश। बाबा ने कहा तुमको नंबरवार शब्द पसंद नहीं था ना और तुम हमेशा कहता था कि नंबर 1 बच्चों को याद प्यार। तो आज मैंने नंबर 1 बच्चों को याद प्यार दिया। हाँ, बहानेबाजी में नंबर 1 बच्चों को याद प्यार दिया, ऐसा कहा बाबा ने। तो मैंने कहा नहीं बाबा, बहानेबाजी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होना चाहिए। बाबा ने कहा नहीं, मेरे सभी बच्चे Ok, je viens d'ouvrir. नंबर 1 है। Alors, Baba est numéro 1. C'est vrai, Baba veut que nous fassions des efforts rapides, mais pas des justifications. Mateshwari Mama est restée. परंतु हम क्या कहते हैं, बहाने बनाते रहते हैं, अनेक प्रकार के बहाने बनाएंगे। हमारे घर में मम्मा C'est vrai, रहती थी au हमारे mom- साथ में, हमारे elle घर est में restée à la छोटे थे। maison pendant उनका 18 नाम mois à मम्मा Mumbai. मातोश्वरी, मम्मा। On l'appelait हम सब Mama उनको मम्मा कहते थे, et मातोश्वरी। on avait des रहते थे। discussions avec elle tous les jours. तो Mama उनके साथ भी काफी avait कॉम्पिटिशन होता था। l'habitude एक बार मम्मा रोज d'avoir du रात को yoga 11 tous बजे les सो jours à करके योग partir de करती थी, 2h30 2h30 एक et बार क्या on हुआ, हम dormait शायद 10 साढ़े 10 on बजे se सो जाते थे। couchait à 10h30 तो le एक दिन soir. कुछ पार्टी Un बाहर गांव jour, से आई थी मिलने करने के लिए, un groupe est मिलने नहीं तो arrivé मिलने, तो pour हम मिल गए। rencontrer. Il était 12 बज गए तो हमने midi. मम्मा को कहा कि मम्मा आज तो 12 बज गए, Alors, au lieu de se coucher à रोज 10h30, तो आप 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हैं, ça a आज été 12 बज गए, हमारा डेढ़ minuit. 2 घंटा C'était देर une से longue देर से हो गई है। journée. अभी आप Et pour se 12 lever à बज गए हैं, 2h30 ce 2 jour-là, घंटा maman डेढ़ a घंटा तो dit, हो ही जाएगा। pourquoi? तो आज आप 2:30 Vous बजे avez simplement fait beaucoup नहीं de उठेंगी services ना, aujourd'hui. क्या क्या आप 2:30 Vous बजे avez fait उठेंगे? beaucoup de services aujourd'hui. तो मम्मा ने कहा कि क्यों? मैंने कहा मम्मा Alors, आज तो j'imagine. आज ने 12 साढ़े 12 तक आपने Alors, सेवा किया, le jour où vous faites beaucoup de आज services, ce आज क्या बात है? jour-là, votre जिस yoga दिन va ज्यादा सेवा fluctuer. Le करते हैं उस दिन matin, maman सुबह a का dit, योग में dans ऊपर नीचे quel कर देते हैं। murli de Baba il est dit que तो le मम्मा ने jour कहा कि कौन सी मुरली में बाबा où ने vous कहा avez हुआ fait है कि beaucoup जिस de दिन ज्यादा beaucoup पुरुषार्थ किया d'efforts हुआ हो, et que ज्यादा vous avez सेवा donné किया beaucoup de हुआ हो, उस दिन services, सुबह vous ne योग vous कीजिए। levez pas pour le yoga? ऐसी कौन Et सी j'ai मुरली dit, में कहा है? il y a tellement de मैंने choses que कहा कई Baba बातें बाबा ने कही नहीं है, euh, परंतु हम कर लेते हैं। nous a pas dit, हम mais que बच्चे l'on हैं, हम fait, बच्चे तो nous les अपने enfants. मतलब की बात कर लेते हैं। Les, बच्चों les का मतलब enfants ये है कि जो अपनी इच्छा से veulent काम करे उसको faire des सफल करे। choses qui sont favorables तो pour मम्मा ने eux-mêmes. कहा Maman नहीं, a मैं तो dit, 2:30 बजे उठूंगी। je vais मैंने me कहा lever à मम्मा ऐसा हो 2h30 सकता है demain. कि Et आज maman s'est मम्मा levée. थोड़ी ज्यादा सेवा किया, Alors, des choses आज arrivent. ज्यादा Maman हो a गया dit, था। alors les तो enfants हमने कहा vivent, नहीं, ont des इसमें सबके activités. बच्चों को याद करने के लिए बाबा Les कृपा activités शरीफा जो devraient है être selon इसके आधार Shrimat. पर जीवन का व्यवहार होना ही चाहिए। निराली Pacha, शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी। आपने बाबा हमें Om Shanti Bhakti Parivar. Om Very Shanti Bhakti Parivar. announcement about time Euh, change. Alors, c'est un changement d'heure ce soir.
Alors, on change d'heure ce soir. Enfin, cette nuit à 2 heures du matin. Souvent, c'est bon de changer juste avant d'aller dormir. We will have to change our clock Alors, on recule d'une heure. 1 hour. Je pense qu'il y a des discussions sur comment on change d'heure. So, before you sleep, you Alors, will avant d'aller dormir, on go change ahead, d'heure et change c'est your clock 1 hour. déjà fait. Oui. So that's the change for tomorrow. So please remember to change your clock because it will also change our timing for Vikti Parivar as well. Ah, ça changera aussi les heures pour le So programme tomorrow avec is Parivant. our Demain, schedule c'est from 11 dimanche. AM to 12:45 AM. Alors, la Meritvela demain matin, Eastern le Standard Murli Time, followed by Hindi et la Sapphire méditation à Morning, 6 heures, la méditation à meditation, 7h30, Bog offering, l'offrande de English, Bogue Arabic, à and 7h45, le Malayalam. Murli And en we will anglais à continue 8 for heures. Miss Madhuban online Ensuite, le program. programme des doubles We have étrangers transformed demain, negative c'est Surya, Surya à partir de transforming negative 9h30. impressions. Transformer les impressions négatives et le Will be trauma. 9:30 to 10 Alors, c'est de 9h30 à 10h30 à l'heure de l'Est. Vikti Parivar. Vous êtes les And then bienvenus. in the evening, 6 o'clock Et dans la meditation soirée, la followed by méditation à partir de spotlight 18 meditation. heures, And this series is la based on série Hindi en literature. hindi à partir de So, 19h15, Murli's etc. welcome to a Vikti journey of Alors, le begins Murli from Avyakt 1969. à partir de Speaking out of Indonesia. 1979. Om Shanti. Om Shanti. Avyak Murli, C'est le Murli Avyakt 2nd of February du 2 février 1972. Les signes d'amour d'un intellect empli d'amour. Les signes d'amour emplis d'intelligence. Êtes-vous tous stabilisés dans le niveau aviaque? Vous savez, ce n'est qu'en étant stable au stade dans le niveau aviaque que vous pouvez célébrer une réunion aviacte. Demandez-vous dans quelle mesure vous avez acquis l'expérience d'être stable dans ce niveau aviacte. Chaque pensée et mesure, que vous avez l'expérience d'être stable et chaque pensée, chaque tâche de ceux qui restent stables dans le niveau aviaque est alokhique. Tandis qu'ils vivent dans le monde corporel, se sont engagés dans un travail physique. Ceux qui ont un tel niveau aviaque restent aussi détachés qu'une fleur de lotus et sont constamment aimés par le Père unique. Ceux qui restent constamment dans un niveau alokhique et aviaque sont appelés Allah-lo. Les gens qui appartiennent à Dieu. Il existe également de nombreux autres types. De telles âmes sont appelées celles qui ont un intellect aimant. Vous avez l'expérience à la fois de ceux qui ont un intellect aimant et de ceux qui ont un intellect séparé du Père. C'est pourquoi vous écrivez le slogan principal. Au moment de la destruction, les Pandavas avaient un intellect aimant et ont remporté la victoire, tandis que ceux qui avaient un intellect séparé de Dieu ont été conduits à la destruction. Vous appliquez-vous ce slogan à vous-même tout au long de la journée, quant à la durée pendant laquelle vous avez un intellect aimant? Autrement dit, pendant combien de temps êtes-vous victorieux? Pendant combien de temps êtes-vous vaincu à cause d'un intellect qui est séparé de Dieu? Au moment où vous êtes vaincu par Maya, avez-vous un intellect aimant? Avoir un intellect aimant signifie être victorieux.
puisque vous dites aux autres de ne pas être ceux qui ont un intellect séparé de Dieu au moment de la destruction, mais au contraire de développer un intellect aimant. Vérifiez-vous également si vous avez un intellect aimant ou un intellect séparé de Dieu. Ceux qui ont un intellect aimant ne peuvent pas créer ne serait-ce qu'une seule pensée contraire à la Srimad. Si vous avez des pensées, des paroles et des actions qui vont à l'encontre de Srimad, est-ce que cela peut s'appeler avoir un intellect aimant? Avoir un intellect aimant signifie que l'amour de votre intellect doit être constamment lié à l'unique bien-aimé. Lorsqu'il y a un amour constant pour l'unique, votre amour ne peut être lié à aucune personne ou chose. Car avoir un intellect aimant signifie faire constamment l'expérience que Bab Dada est personnellement devant vous. Lorsque le Père est constamment et personnellement devant vous, vous ne pouvez jamais vous détourner du Père. Se détourner signifie de ne pas avoir le Père personnellement devant soi. Parce que ceux qui ont un intellect aimant sont constamment et personnellement devant le Père. Le son qui émerge constamment de leurs lèvres et de leur cœur est « Je mange avec toi, je m'assois avec toi, je parle avec toi seul, je t'écoute seul, j'ai toutes les relations avec toi seul et j'obtiens toutes les réalisations de toi seul. » Même s'ils ne disent rien, leurs yeux et leur visage parlent. Êtes-vous devenus ceux qui ont ce genre d'intellect aimant au moment de la destruction? C'est-à-dire, êtes-vous devenus ceux qui ont un niveau constant dans l'amour de l'unique? Quand vous êtes personnellement sur le chemin, sur le champ de l'action dans le monde physique, dans la forme corporelle, vous expérimentez avoir un amour, un intellect aimant comme celui que Baba vient de discuter, n'est-ce pas? Vous racontez cette expérience, n'est-ce pas? De la même manière, si vous pratiquez être constamment et personnellement devant Bab Dada par le yoga de votre intellect, ne pouvez-vous avoir constamment cet intellect aimant quand vous regardez le soleil. Les rayons du soleil viennent à vous, viennent devant. De la connaissance, ne pourriez-vous pas intéresser les rayons de toutes les vertus du soleil de la connaissance, même sans être conscient, vous allez expérimenter les rayons du soleil de la connaissance, être absorbé par l'âme. Om Shanti. Give blessings Donnez des bénédictions et recevez des bénédictions. give regard, Donnez du respect praiseworthy. et devenez digne d'adoration. When a soul is already Lorsqu'une âme est déjà faible, and instead of looking plutôt que de regarder at ses their faiblesses, weaknesses,
Apportez-lui votre coopération et vous recevrez des bénédictions. If you are Si not vous ne pouvez pas anything else, faire autre chose, the easiest effort l'effort le plus facile, blessings c'est de donner des and bénédictions receive et de blessings. recevoir des bénédictions. Give regard Donnez du and respect become et devenez praiseworthy. digne d'adoration. One who gives regard Celui qui donne du respect is respected est respecté by par everyone. tous. And to Et the dans la extent mesure that one is respected, et dans la mesure où il reçoit du respect, claims a right il peut to prétendre the kingdom un droit au royaume and becomes et devient a une worthy âme digne d'adoration. soul. दुआएं दो और दुआएं लो, सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। कोई आत्मा है ही कमजोर, तो उसकी कमजोरी को देखने के बजाय उसे सहयोग दो, तो दुआएं मिलेंगी। अगर और कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो, दुआएं लो। सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनता है, और जितना अभिमाननीय बनेंगे, उतना राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। ओम शांति।